Everyone, my name is Ankit Verma and you are watching my channel Engineering Tutor. This is lecture number 37 of this lecture series, in which we will discuss some important numericals on previous year GATE numericals on impulse momentum principle. We will discuss some test series problems as well as some IIT problems, IIT mains problems. So let's start the lecture. This is question number 1, GATE 2016 क्वेश्चन है ये. इसमें क्या कहा है? Let me discuss it in English. This is a ball of mass, suppose some mass m. It is moving with velocity v and making an angle theta with the x-axis. It strikes this surface in which E equals to 1. Or it is a perfectly elastic collision. After collision, it will rebound. He has asked that find the change in momentum. Final momentum minus initial momentum. 4 options was given. So, what was the initial momentum? You have to break this velocity into 2 components. That will be v cos theta and this is v sin theta. If this is positive axis and this is also positive, what is the momentum? mv cos theta I cap plus mv sin theta j cap. This is the initial momentum of the ball. Okay. What is the final momentum of the ball? Finally, the ball will move with the same velocity as the coefficient of restitution is 1. Okay, so the final velocity will also be v and that is also making an angle theta. So if this was angle theta, this is also theta. This will be v cos theta and this will be v sin theta. So the momentum, final momentum, if this is initial momentum, what is the final momentum? mv cos theta, because it is acting in this positive axis, minus mv sin theta j cap. And this will be in I direction. This will be PF, final momentum. So what is the change in momentum if you subtract it from here? Okay, that will be minus mv sin theta and this will also become minus sin. Second, और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ PF minus PI क्या आएगा? minus 2mv sin theta j cap. This will be the answer. ओके, 1 नंबर में सवाल था ये, 1 मार्क क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट में 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. दिस इज अ कार्ड हैविंग वेट 10,000 kg. व्हाट इज द वेट गिवन? 10,000 kg. Okay, this is a spring having spring constant 2 meganewton per meter. Identical wagon is given and it is this wagon A is moving with velocity v. It is at rest. After collision, definitely both the wagons will move. A and B are identical. Find the maximum compression of the spring. इसमें एक कंसेप्ट छुपा है जो कि मेरे को डिस्कस करना है. I want to discuss a concept with you. देखिए, during collision, maximum compression of the spring will take place when the 2 blocks will have same velocity. This is really important question. In fact, मैंने ये प्रूफ भी कराना था, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ. देखिए, कभी भी ऐसे 2 बॉडीज हैं और बीच में स्प्रिंग है और somebody asking you find the maximum compression of the spring. When will be the maximum compression of the spring? Suppose the displacement of the second body be xb. After when they will collide, definitely it will move to some distance at that instant and this is also moved to some displacement at that instant. Suppose that will be xa. The relative displacement will be this.
when the relative displacement between them is 0. ये क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत कम लोगों को समझ आता है. डायरेक्टली बुक में सॉल्व है कि आप जो इसमें मैं बताऊंगा दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, लेकिन क्यों है ऐसा, व्हाई हैपेंड, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं. द change in displacement during when the spring will compressed to its maximum value, the displacement between them will be 0. ऐसा ही होने वाला है. If you differentiate with this respect to time, dxb upon dt. ये जब मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तब मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है इसी सेम कंसेप्ट पे, और गेट में देखो 5 नंबर की सवाल है. ओके, देखते हैं. बराबर 0. सो वी बी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी. सो द बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर द कोलिजन विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, दैट विल बी, लेट इट बी v. मैंने डायरेक्ट नहीं करा, ये कंसेप्ट आपको समझा. आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा. रिलेटिव वेलोसिटी जब उनके रिलेटिव डिस्टेंस उन दोनों के बीच का 0 हो जाएगा, तब ये स्प्रिंग क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा उस इंस्टेंट पे. ओके, सो लेट मी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन नाउ. अभी कुछ नहीं रह गया. सपोज यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. This block, let the mass be m and the initial velocity be v. This is the momentum for block A, for wagon A. Second wagon, that is wagon B, is at rest. Initially it is at rest, so its momentum will be 0. Finally, I have said both the bodies will move at same speed, will have same velocity during the maximum compression of the spring. Let the velocity be v. Mass will remain unchanged and the mass will be m, because this is an identical wagon. This is for A and this is for B. So v equals to u by 2 from here. Okay. Now you have to apply the energy conservation, or you can apply the work energy principle. जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हो. इनिशियली मैं अब आपको हर बार वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से करा था, इस बार मैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी बता देता हूँ. साइड में मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का भी बता दूंगा, जिसका जैसे मन करे वैसे कर सकता है. इनिशियल एनर्जी, इट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, विद दिस एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. द ब्लॉक B will have 0 kinetic energy as it is at rest. What is the final kinetic energy then? Both the blocks will move, all the blocks or wagon will move with the velocity v. Then it will be half mv square and half mv square. This is the kinetic energy. Okay, this is the final kinetic energy, and also the half x square will be the elastic potential energy. Okay, and the x will be the maximum compression. Okay, so by this v equals to u by 2 you can put here, and the velocity u is also given, that is 5 meter per second. Value of k is also given, 2 meganewton per k. M is also given, that is 10,000 kg. So from here you can calculate, or if you want to apply work energy principle, that is also simple. What was it? Net work done will be 0, means for the block or wagon, as the weight is this and the distance moved be x, for that work done will be 0, as the angle between them is 90 degree. But there will be elastic work done, that is half k xi square minus half k xf square. Initially it is at natural length, so it will be 0 minus final compression will be half x square into kx square. Okay, equals to change in kinetic energy. What is change in kinetic energy? Final kinetic energy of the blocks. Two wagons, both are moving with velocity half mv square. This is for A, for the block A.
initially it is moving with velocity u. So this is for A, change in kinetic energy. For the block B, change in kinetic energy will be half mv square and the wagon B initially at rest. Okay, from here the same equation will come out. Okay, so from here you can calculate the value of x and x will be 25 सेंटीमीटर. 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट. 2 क्वेश्चन हमने अब तक इसमें डील कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है. एक ये स्प्रिंग पे प्लेट है 2.5 kg की. दिस इज द स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट. दिस इज अ बॉडी ब्लॉक ऑफ 5 kg. The height is 2.6 meter from this plate. Find the maximum deflection of the spring after the impact. This is a test series question. Let me discuss this. See, if it is at a distance 2.6 meter, what is the velocity of this block after it impacts on it? So that will be v1, that this velocity will be v1, that will be 2 under root 2gh. Okay, this will be 2 into 9.6 into 2.6 under root. So this will be some value. Okay, let this equation be 1. After the impact you can apply conservation of linear momentum, that is m1 u1 plus m2 u2 बराबर m1 v1 plus m2 v2. Okay, then what is m1? What is m1? m1 is what? This 5 kg body. It is moving with velocity v1, so that will be, so this is v1. Okay, so this v1 is u1 here because it is moving with some velocity, so you can say this is velocity u1. That will be this value. Let me put this value directly. Okay, this body, I am calculating the linear momentum conservation for this spin, this body and this body. Initially this body is at rest, so this is 0. Finally this body, 5 kg body, will move because there will be some impact between them. Okay, this body be moving with velocity v1, this 5 kg body, and 2.5 kg body will move with velocity, let be with velocity v2. Okay, he has also stated that the collision between 5 kg and 2.5 kg body is perfectly elastic, and he is also asked to find out the maximum deflection of the spring after impact. So when the coefficient of restitution is 1 or collision is perfectly elastic, then E is equals to 1 and E equals to V2 minus V1 upon U1 minus U2. So from here V2 minus V1 equals to 1, U1 minus U2. And what is U1? U1 is this. This is U1. So this is 2 into 9.6. You can calculate this value. So this is equation number 1 and this is equation number 2. From here, from first and second, you can calculate V1 and V2. So I have already find out these values. 2.38 meter per second and V2 is 9.52 meter per second. So these values are already calculated by me. It is V1 and V2. But he has asked the maximum deflection of the spring. This question is of another level. Okay. The velocity of 2.5 kg changes from 0 to 9.5 meter per second. There will be some gain in kinetic energy and this gain in kinetic energy is stored in the spring. I hope you got my point. Okay. मैंने क्या बताया है अंग्रेजी में कि इस 2.5 kg की अभी वेलोसिटी 0 थी और ये बढ़ के कितनी होगी है 9.52 मीटर पर सेकेंड होगी है. सो ये जो गेन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में ये कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा
स्प्रिंग में जाके, एंड स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, देन हाफ के इज आल्सो गिवन 1172 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम mass of the body 2.5 kg and the velocity is v square. From here half and a half will cancel out and x will be find out. x यहां से आएगा 36 सेंटीमीटर आंसर दिया है ऑप्शन में. तो आप ट्राई करना है इसको सॉल्व करने की, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके, लेट मी डिस्कस अनदर वन. दिस इज अ ब्लॉक of 15 Newton weight. There is a rod of negligible mass. Okay, and this angle is 90 degree. Okay, the coefficient of friction is 0.3. Definitely when this bob will hit to this block of 15 Newton, this block will move towards this direction. When the coefficient of friction is 0.3, definitely there will be some frictional force. The impact, or we can say coefficient of restitution between them is 0.7. So it is inelastic collision, not perfectly elastic. It is an inelastic collision. Determine how far the block will move after the impact. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार सवाल है. Okay. This is given 1.2 meter. This is given 1.2 meter. So this is also 1.2 meter. Okay. So what is the height? 1.2 meter. यहां पर दिया है देखो 1 मीटर. तो आपके दिमाग को क्या लगाना है कि ये भी 1.2 मीटर ही है. This will also be 1.2 meter. Okay. This is 1.2 meter. Okay, then after that, when this height is given, then you can find out the velocity with which it will hit to this block, that is of 15 Newton block. Then you will be, if this is body 1 and this is body 2, if this is body 1 and this is body 2, so the velocity will be of this body will be 2g 1.2. That will be 4.85 मीटर पर सेकेंड. मैंने पहले ही निकाल के रखी है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का कितना है, 0 है. u1 इज 0. ओके, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन. 0.7 v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ओके, सो इक्वेशन क्या आएगी इधर से, v2 माइनस v1 अपॉन व्हाट इज u1. u1 इज 0 माइनस 4.85. 4.85 को आप इधर से मल्टीप्लाई करना. सो दैट विल बी v2 माइनस v1 इक्वल्स टू माइनस के 3.85. सो दिस इज okay. This is equation number 1. Now apply conservation of momentum. Very easy. m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. What will be that? Okay, also this block is of 10 Newton. I'm sorry, it is given this is of 10 Newton. Okay, so 10 upon 9.8, this will be mass and the velocity be of this body be u2. Okay, this body plus initially it is at rest, then it will be 0 equals to m1 v1. This is m1 and let this velocity be v2. इसकी velocity क्या मान लूंगा, v2, और इसकी velocity क्या मान लूंगा, 15 वाले की v1. This is mass. As the weight is given in newtons, you have to divide it with g if you want to calculate m.
Okay, from here V1 plus V2 will be find out. That will be, I have already calculated, 9.8 9.8 will be cancel out, 10 10. So here, from here, this will be 4.85. Okay, this is equation number 1 and this is equation number 2. So from here you can calculate. Okay, so यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, आप चेक कर लेना एक बार, कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक है। 10 आएगा। ओके, U2 की वैल्यू आप यहां से रख देंगे 4.85। ओके, सो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, आप देख लेना एक बार। यहां से V1 V2 आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहां से V1 आप निकाल के देखना, V1 की जो वैल्यू आएगी, V1 की वैल्यू आएगी 1.375 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड V2 विल बी माइनस के 2.02 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया, आप चेक करके देख लें। मेनली इसने आपसे क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। द ब्लॉक विल मूव टिल इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। द ब्लॉक विल मूव टिल इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0. So let me find out this. You have to apply the work energy principle. This block, what is the force acting? Frictional force will act. Obviously, that is 0.3 is the mu, and this block is of 50 Newton. So this is N. So the frictional force will act in this direction. Okay, that will be 0.3 into 50. And the displacement is in this direction, so this will be negative. 0.3 into 50 is the force, let the displacement be S, and it is in negative direction. Okay, what is the change in velocity? Sorry, change in kinetic energy, because the work done of all equals to change in kinetic energy. Okay, what is the change in kinetic energy? That is the half. I am talking about this block. Initially it is at rest, and finally it is moving with some velocity, that is 1.375 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी निकली है इस ब्लॉक की, अभी हमने निकाली है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, हाफ m, m is 50/g, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। Finally, it will be at rest. ठीक है, it will be at rest. Finally, it will be at rest, and initially it is moving with some velocity 1.375 square. So this negative will cancel out. अभी अगर आप इसको इधर लिख देते और इसको इधर लिख देते तो नेगेटिव आ जाता ना डिस्टेंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये ब्लॉक, अब जब इसे आपने कुछ झटका लगा इस पे, when the impact acts on it, it will move with some velocity 1.375 meter per second, and during this period it will move to some distance s. So this is the initial velocity. Finally it will comes to rest. This is the important point here. The block will move till its velocity becomes 0. So from here this minus minus will cancel out and you will easily find out the value of S. देखो ऐसा है, लगभग 37 लेक्चर, 37 लेक्चर्स मैंने इसी चीज पे कराए हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से आपका बिल्डअप हो। अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक सवाल और हो जाए, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है इसका इम्पल्स मोमेंटम का। इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है उसको करेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा वो। और उसके मैं लगभग 15 लेक्चर बनाने वाला हूँ, 13-14 लेक्चर में, उसी के टोटल 50 लेक्चर मैंने कहा था आपको पहले ही कि मैं मैकेनिक्स के बनाऊंगा, और ये सिर्फ डायनामिक्स के मैंने बनाए हैं। मेनली ट्रसेस के मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ओके, सो जो स्टैटिक्स है वो ऑलरेडी हमारा अच्छे से होता ही है, मेनली इसी में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने इस पे बनाए हैं। ओके, so let me discuss the another one. This is the last question of this lecture. Two identical balls are in contact on the table.
a third ball, two identical balls are in contact. This is the mass m, this is of mass m. A third ball, identical, strikes symmetrically. This ball, let this velocity be v. When it will strike symmetrically, join the centers. This will be an equilateral triangle, and the angle between them is 60 degrees. So when this impact acts, this block will move with some velocity, and this ball, this ball also move with some velocity. And as it acts symmetrically, that's why the angle is 60 degrees. This is the most important point. Its third ball strikes symmetrically and comes to rest. This ball comes to rest. After impact, find the velocity of E. बहुत ही शानदार सवाल, IIT की प्रॉब्लम है, IIT एडवांस की प्रॉब्लम है, और ऐसा क्वेश्चन गेट में आने के 500% चांस है. So let me discuss this question. After the impact, what is the scenario of collision? If this is body A of mass ma, some force FAB will act. Suppose this is body B, FBA will act here, and the net force is 0. This is body B having mass mb. Let the velocity be v1. And there is another ball. Let the velocity be v2. Okay, after collision. This scenario is after collision. I hope काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको इस फिगर से. ओके, सॉल्यूशन तो 2 मिनट लगेगी बताने में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए. अच्छा, अब ए और बी के बीच में मैं निकालता हूं. E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. अब तक तो अच्छे से हो गया होगा ये क्लियर. ओके, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, दैट इज E. Finally, so from here you can calculate what E equals to u1 minus u2 equals to v2 minus v1. Okay. Final velocity. This block, this body comes to rest. Okay, and this body or this ball will move with velocity v1. Having made this, and also when this angle is 60 degree, this angle will be 30 degree. This is the only important point here. So this is 30 degrees. So this is v1 cos 30 degree and v1 sin 30 degree. Similarly for this ball, this is also 30 degree. If this is velocity, as the collision is symmetrical, if this ball moves with velocity v1, this ball will also move with velocity v1. So this is v1 cos 30 and this is v1 sin 30. Look at the component of the velocity. This v1 sin theta and v1 sin theta will cancel out. The only impact that we have to find out is for this horizontal component, that is v1 cos 30. So let me apply the conservation of momentum along this x direction, along the line of impact. This is along the line of impact. So the conservation of momentum is conserved along x direction. Okay, so that is m mass v equals to m v1 cos 30 plus m v1 cos 30 degree. So that will be m and m will cancel out. V equals to 2v1 cos 30 degree and v equals to v1 root 3. This is the equation number 1. Okay, अब ये लगाना आपको अच्छे से आ ही गया होगा इक्वेशन कैसे लगती है. ये इनिशियल मोमेंटम था और ये फाइनल. ये इस वाली बॉडी के लिए था और ये वाली इस वाली बॉडी के लिए, जो ये वाली बॉल थी और ये वाली इस वाली बॉल के लिए. एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक ये, इससे भी कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी ना.
बिल्कुल आएगी और वहीं से हम ई निकाल देंगे। देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। मैं बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से चलता हूं, मेरे को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसको लगाते हैं इक्वेशन को। ओके, सो फ्रॉम हियर this will be, what is initial velocity? Let me calculate initial velocity. Initial velocity of the body. This ball is initially at rest. This block. Okay, these two balls initially at rest. Okay, so from here you can apply this u1 minus u2 equals to v2 minus v1. What is V2? V2 is the velocity. V2 is the velocity of this ball. Okay, I will apply the equation for this ball and this ball. There is three balls. There are three balls. This A, B and C. Okay, I am going to calculate the value of E for this and this. Okay, initially this ball will move with velocity u, with velocity v. So this is v, this is v. और इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा टाइम लगा के बताता हूँ, क्योंकि इस कंसेप्ट में एक बात छुपी है जो कि शायद आपको ना पता हो। वैसे मैंने बताया है, अगर ये बॉल इम्पैक्ट ऐसे हो रहा था, ऐसे 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 हो रहा था, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इस लाइन के अलोंग हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन अपनी लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? वो भी इसी डायरेक्शन में लगने वाली है, इसी डायरेक्शन में लगेगी वो। ओके, सो देखिए लगाते हैं इक्वेशन को। तो ये जो मैंने बताया था, और वैसे भी आप इसको कैसे याद रख सकते हो, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी equals to minus e times of initial relative velocity. अब देखो, अब इसके अलोंग आपको लगाना है ना फाइनल relative velocity. This body will move with velocity v1. Okay, and initially this body is at rest, so the final relative velocity is this one, equals to minus e times of initial relative velocity. Initially this body will move with some velocity v, with velocity v. So along this direction, the component will be v cos 30, and initially it was at rest, so this is 0. From here v1 equals to e into v root 3/2. This is the most important concept. मैं फिर बता रहा हूँ, ये जल्दी से समझ नहीं आता है। अगर आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आप बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट सीख चुके हो। ओके, तो दिस इज फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, एंड दिस वाज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये चीज मैंने बता दिया। लेक्चर कोई दिक्कत हो लेक्चर को बैक करके देखो। एक ये इक्वेशन बनी थी अपन के पास, एक ये बनी है क्या, v इक्वल्स टू v1 रूट 3। तो v को मैं यहां पर v1 रूट 3 लिख देता हूं। तो यहां से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। मैं इस क्वेश्चन को कम से कम भी 10 में से 10 रेट करता हूं। अगर कुछ टफ क्वेश्चन किसी भी इस टॉपिक पे बना तो इससे मुश्किल नहीं हो सकता। ओके, काफी कोशिश की है मैंने 4-5 लेक्चर में सिर्फ इसी कंसेप्ट को सिखाने की। अब मुझे ऐसा लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इजीली लगा पाएंगे। ओके, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।